my channel, The First Traders. My name is Ashay, and people also know me as The First Trader. And I'm from India, and I trade mainly London and New York session. Okay, so this is what you all have been waiting for. So मैं क्या करूँगा? I'm just gonna start many series. All right. Complete trading using supply and demand. And when I mention this, supply and demand, this is because it is what I have been trading. This is what I understand, and it has been very successful for me. All right. So it might be different from other mentor or YouTuber, and I'm not making any money from you. So you can just maybe hit the like button and subscribe button. All right. Okay. But some of you might think it is very basic, but just bear with me. मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखूँ, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग में इट इज़ नॉट गुड टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. At the end, this is an educational course. You will understand supply and demand trading, ये कैसे काम करती है, and it will ensure you will earn a lot of money from the market, a lot of consistent money from the markets. So without wasting any time, let's begin. So there are some rules to follow. All right. So मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंटर नहीं करूँगा, but you must follow these rules. If you fail to follow these rules, you won't be able to apply supply and demand correctly. So आपको ये rules follow करने होंगे. Okay. So पहला rule, you must do your homework. Okay. So while learning this supply and demand, you must do your homework. That means you must backtest. Okay. So you can backtest on TradingView, and don't trust a word I say. Okay. Just backtest it as you are learning it. Backtest it, and you will know how strong this strategy is. Okay. So remember, you must do your homework. Second rule is as a beginner, try to avoid your mobile phones. To look at the charts as a beginner. This is my personal experience. और आज हर चीज़ स्मार्टफोन्स के बारे में बट इन डिवाइसेस की मेन प्रॉब्लम ये इनका साइज स्क्रीन का छोटा होता है. अनलेस यू हैव अ वेरी बिग स्क्रीन मोबाइल फ़ोन, सो यू हैव प्रॉब्लम्स वाचिंग द हिस्ट्री ऑफ द चार्ट्स. और ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी ये बेस चार्ट के हिस्टोरिकल मूवमेंट्स पे बेस है, लाइक हाउ द प्राइस मूव्ड इन द पास्ट. So that is very important. You try to use a laptop or a computer screen for the analysis. Okay. So third rule is that like I always say, I want you to be a successful trader. So do not trade until you watch and understand the concepts I'm sharing clearly. Okay. All right. You can feel कि आपको सब कुछ समझ में आ गया कि 2-3 वीडियोस देखे आपने, and you feel like you know everything and start using your real money. Of course it's your own money, तो आप जो चाहें कर सकते हैं उससे. बट आई स्टिल एंड ऑलवेज एडवाइज यू टू डू योर बैक टेस्टिंग फर्स्ट, डू योर लर्निंग फर्स्ट, एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन अ डेमो अकाउंट. ओके. डेमो और रियल का सेम एनवायरनमेंट होता है, कंप्लीटली सेम. ओके. जस्ट डिफरेंस है इमोशनल, साइकोलॉजिकल, एंड वी विल गो थ्रू इट लेटर इन द सीरीज. सो इन द बिगिनिंग जस्ट स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट एंड ओनली ट्रेड द रियल अकाउंट, रियल मनी, व्हेन यू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट. ओके. तो सबसे पहले हम जापानीज कैंडल स्टिक्स बार्स के बारे में देख लेते हैं. लेफ्ट साइड में बेरिश कैंडल है, राइट साइड में बुलिश कैंडल है. ओके. आप देख सकते हैं कि कैंडल की बॉडी कौन सी पार्ट कहलाता है एंड शैडो कौन सा पार्ट कहलाता है. एकदम टॉप जो होता है कैंडल का उसे कहते हैं हाई, एकदम लो को कहते हैं लो, एंड जो अपर शैडो है उसको एक अपर विक भी कह सकते हैं, और लोअर शैडो को लोअर विक, एंड सेम गोज फॉर द बुलिश कैंडल. ओके. Let's move on. So now I will give you a short introduction to supply and demand, और मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, as simple as possible, and I will also give you certain examples. So these are the types of traders in the market. Okay. मार्केट में किस किस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं. Okay. There are 2 types of traders. There are retail traders. Okay. So retail traders कौन होते हैं? These traders are the individual traders just like you and me, जो अपने पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड करते हैं.
Okay, they are either using a personal computer or a mobile phone, and the platforms they are using are usually MetaTrader 4 or MetaTrader 5, and nowadays there are many more platforms like CTrader, etc. And second type, these are the institutional traders. Okay, ये वो ट्रेडर्स हैं जो कि मेजर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेज फंड्स के लिए ट्रेड करते हैं. ओके, दीज आर द मार्केट मेकर्स. ओके, दीज आर द ट्रेडर्स विच हैव द पोटेंशियल एंड द कैपिटल टू मूव द मार्केट्स. ओके, सो जो भी आप बड़े बड़े मूव्स देखते हैं जो मार्केट में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मूव, ये सारे के सारे मूव्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स करते हैं. ओके, एंड एग्जांपल्स हैं जैसे कि जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, HSBC एंड बैंक ऑफ चाइना. So these are good examples of some big hedge funds and institutions that trade. Okay, and the next points to consider कि कौन से टाइप के ट्रेडर्स हैं जिनके पास बिगर कैपिटल है और मोर ऑर्डर्स हैं, राइट. एंड सेकंड पॉइंट है टू कंसिडर कि कौन से टाइप के ट्रेडर्स अभी करंटली मार्केट में पावर में हैं. ओके, सप्लाई या डिमांड, बायर्स और सेलर्स, हु इज इन पावर्स राइट नाउ, in power right now. Okay, you can also imagine retail trade like traders and institutional traders like normal small fish and shark in the sea. Okay, the institutional traders are like shark. Okay, and if you are going against them they will just simply eat you, and hum retail traders we are like the smaller fish. So our task is to follow the shark in the same direction the shark is going. We have to go in the same direction with them. Okay, we cannot fight the shark. So in this slide you will see that if a demand of a certain asset increases then the price increases and vice versa. That means अगर आपके पास सपोज कीजिए मार्केट में 5 एप्पल्स हैं और ख़रीदने वाले 10 हैं, that will make the shopkeeper to increase the price of the apple, right? And if there are 10 apples और ख़रीदने वाले 5 ही हैं तो shopkeeper will try to give discounts so that all of his apples can sell off, right? So basically price ऊपर तभी जाता है जब एक certain asset की एक particular चीज़ की प्राइस डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तब प्राइस ऊपर जाता है. एंड जब सप्लाई ज़्यादा होती है एंड डिमांड कम होती है तब प्राइस नीचे जाता है. Okay, now let's talk about supply and demand balance and imbalance. बैलेंस और इम्बैलेंस तब क्रिएट होता है प्राइस में जब अगर मान लो सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, तो एक फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस क्रिएट होगा प्राइस में. ओके, एंड जस्ट लाइक सप्लाई, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस बनाएगा. जैसे कि आप इस विंडो में देख सकते हैं जहाँ पर प्राइस ने इतना सडनली ड्रॉप किया है, एक बड़ी रेड बियरिश कैंडल बनी है और डेट मीन्स यहाँ पर नीचे कोई डिमांड नहीं थी. ओके, सो प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस बनाया और ये एक इम्बैलेंस बहुत ही काम की चीज़ है. बहुत कई तरह की स्ट्रेटजीज़ में इसका इस्तेमाल होता है और फॉरेक्स ट्रेडर्स यूजुअली इन एरियाज़ पे नज़र रखते हैं. बिकॉज मार्केट जब भी फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस या फिर इनएफिशिएंसी छोड़ता है तो ये फिल ज़रूर होता है. यहाँ पर काफ़ी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं एंड प्राइस ने इसे जस्ट ब्रोक थ्रू दैट प्राइस. दैट्स वाई देर आर लॉट ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स देयर. सो ये लिक्विडिटी की तरह है एंड प्राइस उस लिक्विडिटी को लेने हमेशा आता है. सो इस तरह जब प्राइस सडन मूवमेंट्स करता है, जब बहुत ही बड़े मूव सडनली आते हैं तो प्राइस इम्बैलेंस बनाता है एंड इम्बैलेंस की तरफ प्राइस हमेशा अट्रैक्ट होता है. ये एक मैग्नेट की तरह प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज़ वाई इम्बैलेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स टेक इट ऑन द चार्ट्स. आई विल शो यू हाउ इट लुक्स द बैलेंस एंड इम्बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड. सो सपोज कीजिए प्राइस रेंज कर रहा है, ओके, एंड देन प्राइस सडनली ऊपर जाता है. सो दिस जोन इज़ अ बैलेंस्ड जोन. इस जोन के अंदर प्राइस बैलेंस में है कंप्लीटली, बायर्स और सेलर्स, राइट, एंड देन प्राइस सडनली गोज अप, so creating imbalance over here. Okay, so this area is called imbalance. Let me type it so you don't get confused. It's the balanced area.
and this is the imbalanced area. Okay. So what the price does again, price ranges up, down, up, and then it falls again, right? So again you can see this is the balanced area. Here the price is balanced, supply and demand are balanced. Okay, and when the price suddenly falls like this, creates another imbalance. Okay, so what the price does, price gets attracted towards the imbalance. प्राइस हमेशा इम्बैलेंस को फिल करने आता है, बैलेंस से निकलता है और इम्बैलेंस को फिल करने आता है. ओके, लेट मी शो यू ऑन द चार्ट्स. सपोज दिस इज द प्राइस यहाँ पर रेंज कर रहा है, सो दिस इज द बैलेंस्ड एरिया. ओके, दिस इज द बैलेंस्ड एरिया एंड प्राइस ने सडनली एक डाउन मूव दिया, ये देखिए इधर, क्रिएटिंग इम्बैलेंस. This is the imbalance the price created. Okay, and there will be thousands of examples. If you see on the charts here, you can see the price was in balance. Okay, then it suddenly up move and price created imbalance, inefficiency. This is the very important area. Okay, and another example here, you can see price was in balance situation and then it gave a sudden up move, creating imbalance, right? And here also you can see, here everywhere you will see price creates a lot of fair value gap and a lot of chances for us to get into a winning position. Okay, and here also you see price was balanced. यहाँ पर पहले पूरी बैलेंस पे था प्राइस एंड प्राइस ने सडनली डाउन मूव दी, क्रिएटिंग इम्बैलेंस. This sudden down move is called imbalance. Okay, and as you can see, the imbalance is always formed between three candles. Okay, so if you see here, the first candle's bottom wick and the third candle's top wick, the area between that is completely fresh. If you see it, this is called imbalance. I hope you understand it. This area between the bottom wick of the first candle and the top wick of the third candle, and the color doesn't matter, the color of candle doesn't matter while marking the imbalance. Okay, and just here, just like the first example, here you see the top wick of the the top wick of the third candle and the bottom wick of the first candle. Okay, this area is called imbalance, and this area we will be using later in our strategy, later in the lessons. So I hope आप लोग अच्छे से समझ गए हो imbalance के बारे में. So like you see here, first candle, second candle and third candle. Okay, so bottom wick of first candle, top wick of third candle, this is imbalance over here. Okay, just like here, if you see, first candle, second candle was very big and third candle, so ये area पूरा imbalance. Okay, and there will be many examples again and again on the chart. You see here and here. Okay, so इस देखिए अपने प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर imbalance बनाया, वापस आया, इस imbalance को reject करके वापस नीचे. These are the imbalances, or you can see here the bottom wick of this candle and the top wick of this candle, imbalance, and here also you can see the imbalance, and here also you can see the imbalance between these three candles. Okay, and everywhere there is imbalance and we can use it to our advantage. And how are we going to do that, I will explain to you later in this course. Okay, that's how you mark the imbalances. Okay, if you notice here, here is no imbalance because there is no gap between this wick. See, the wick is covering everything, so there is no gap here, right? And you see here is a great example of fair value gap. See here, I hope you understand this concept very well now. So guys, this is all, and don't forget to like, subscribe and comment. If you have any questions, आप पूछिए बेझिझक, मैं आपको जवाब दूंगा.
आपको सारे सवालों के। एंड पहला वीडियो था तो ये कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट मार्केट स्ट्रक्चर। I hope you guys like this video, and I am a new YouTuber, so I will definitely improve with it, and I hope you also will improve as a trader being with me. Thank you, take care, bye bye.